So, a very good morning, students. Greetings of the day. Welcome to the online lecture series on the railways, airport, and waterways. So, I welcome you all for the lecture number 32, Unit 4, that is Introduction to the Airport Configuration. This entire course is being designed as for the railways, airport, and waterways. Okay, so first three unit was divided for the railways. The fourth unit is dedicated to the airport, and the fifth unit is about the waterways. Okay, so this entire unit is all about the airport planning and design. And in this airport planning and design, we will be discussing about the airport configuration. Okay, so this lecture is dedicated to the introduction part of the airport configuration, right? So let us have a look towards the syllabus of this airport configuration. This is goes like this. It is actually unit number 5 of the module number 4, right? Module 4 is about the airport planning and design. This is the lecture number 32 for this entire course, and unit number 5 for this airport part. Okay, and this is basically divided into three parts. This unit 5, the syllabus is like this. The contents of this lecture will be as follows: introduction of the airport configuration, then the analysis of the wind, site selection approach, right? So we'll look towards all these 3 points one by one. Let us have a look towards the first one, that is introduction of the airport configuration, right? So we talk about the airport configuration, right? So first of all, this slide is dedicated to the introduction part of the airport configuration. See, students, a major determinant of airport capacity is the overall layout and design of the system. So if we describe and if we define that how an airport capacity is decided, it is basically depend upon the overall layout and design of the system. अगर किसी भी एक एयरपोर्ट की कैपेसिटी को हमें डिटरमाइन करना हो तो हमें उसकी ओवरऑल लेआउट और उसके डिजाइन सिस्टम को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है? तो पहला पार्ट जो है आपका इंट्रोडक्शन टू एयरपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में यही है कि अ मेजर डिटरमिनेंट ऑफ द एयरपोर्ट कैपेसिटी इज द ओवरऑल लेआउट एंड डिजाइन ऑफ द सिस्टम. ओके, सो एयरपोर्ट कैपेसिटी का जो मेजर डिटरमिनेंट है वो क्या है? उसका ओवरऑल लेआउट और डिजाइन किसका? सिस्टम का, ठीक है? उसके बाद जो एयरपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड डिफाइंड एज द जनरल अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस पार्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ द एयरपोर्ट सिस्टम, ठीक है? तो एयरपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन की अगर जब हम बात करते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है, और ये एक्चुअली इसको अगर डिफाइन किया जाए लेमैन लैंग्वेज में तो इट इज द जनरल अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ द एयरपोर्ट सिस्टम. ओके, तो स्टूडेंट, the first thing is that whenever you talk about the airport configuration, the major determinant of the airport capacity is determined by the overall layout and design of the system. ठीक है, पहली चीज क्या कि अगर हमको एक एयरपोर्ट की कैपेसिटी को डिटरमाइन करना है तो किस पे डिपेंड करेगा? दो चीज पे, उसकी ओवरऑल लेआउट पे और किस पे? डिजाइन ऑफ द सिस्टम पे, ठीक है? दूसरी चीज, जो एयरपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है? और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है क्योंकि ये आपका जनरल अरेंजमेंट ऑफ द इट डिफाइन द जनरल अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस पार्ट और द कंपोनेंट्स ऑफ द एयरपोर्ट सिस्टम. So, a major determinant of airport capacity is the overall layout and design of the system, and airport configuration is the most important factor and defined as the general arrangement of the various parts or components of the airport system. The first slide is all about the introduction part. Now, moving toward the second slide. The second slide is about the definition part. What are the various components which when combines and form the airport configuration? Actually, the airport configuration
is defined as the number and orientation of the runways and the location of the terminal area relative to the runway. अगर एयरपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन को हमको डिफाइन करना हो तो ये कैसे डिफाइन होता है? इसका एक स्टेटमेंट अगर डेफिनेशन का हो तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर एंड ओरिएंटेशन ऑफ द रनवेज. ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? नंबर, टोटल नंबर एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द रनवेज and the location of the terminal area relative to the runways. So airport configuration is defined as the number and orientation of the runways and the location of the terminal area relative to the runways. Okay, तो configuration आपको समझ में आ गया कि पहली चीज होती क्या है. उसके बाद ये किस पे डिपेंड करता है? टोटल नंबर ऑफ द रनवेज एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द रनवेज और लोकेशन ऑफ द टर्मिनल एरिया रिलेटिव टू द रनवेज. तो इसका मतलब ये सारी चीजें रिवॉल्व कर रही हैं रनवेज के अराउंड. ठीक है, नंबर ऑफ रनवेज डिपेंड अपॉन द एयर ट्रैफिक वॉल्यूम. जो आपका रनवे है वो किस पे डिपेंड करता है? जो टोटल नंबर ऑफ रनवे है वो डिपेंड करता है आपका एयर ट्रैफिक वॉल्यूम पे. ओरिएंटेशन ऑफ द रनवे डिपेंड्स ऑन द direction of wind, size and shape of the area, and land use and airspace use restrictions in the vicinity of the airport. तो जो ओरिएंटेशन है रनवे का, मैंने बताया ना कि एयरपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन दो चीज पर डिपेंड करता है. पहला तो नंबर ऑफ द रनवेज, और नंबर ऑफ रनवेज किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा एयर ट्रैफिक वॉल्यूम पे. फिर दूसरी चीज मैंने आपको बताया ओरिएंटेशन ऑफ द रनवेज, और ओरिएंटेशन ऑफ द रनवेज किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्शन, किसके? विंड के डायरेक्शन पे. साइज एंड शेप ऑफ द एरिया एंड लैंड यूज एंड एयर स्पेस यूज रिस्ट्रिक्शंस इन द विसिनिटी ऑफ द एयरपोर्ट. दूसरी चीज. तीसरी चीज आते हैं, the terminal building should be located so as to provide easy and timely access to runways. So airport configuration was basically depending upon the number of the runways, the orientation of the runways and the terminal area. Okay, I mean terminal building. अब नंबर ऑफ रनवेज डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एयर ट्रैफिक वॉल्यूम के. ओरिएंटेशन ऑफ द रनवे डिपेंड करता है आपका डायरेक्शन ऑफ द विंड, साइज ऑफ द विंड एंड शेप ऑफ द एरिया, एंड लैंड यूज एंड एयर स्पेस यूज रिस्ट्रिक्शंस इन द विसिनिटी ऑफ द एयरपोर्ट. और टर्मिनल बिल्डिंग आपका ये डिपेंड करता है कि इसका लोकेशन ऐसा होना चाहिए सो एज टू प्रोवाइड द इजी एंड टाइमली एक्सेस टू द रनवेज. राइट, सो दिस इज अबाउट द airport configuration part, which is defined as the number and orientation of the runways and the location of the terminal area relative to the number runways, in which the number of runways depend upon the air traffic volume, orientation of the runways depend upon the direction of wind, size and shape of the area, and land use and air space use restrictions in the vicinity of airport. The terminal building should be located so as to provide easy and timely access to the runways. Right. After this slide, let us move towards the next slide. And the next slide says, अभी मैंने आपको बताया ना कि wind पे डिपेंड करता है. ठीक है, wind पे क्या डिपेंड करता है? wind पे आपका डिपेंड करता है ओरिएंटेशन. ठीक है, wind पे डिपेंड करता है. तो अब थोड़ा सा wind की एनालिसिस करते हैं. wind की स्टडी करनी पड़ेगी. एनालिसिस ऑफ द विंड फॉर ओरिएंटिंग द रनवेज. ठीक है, तो जब हम एनालिसिस करेंगे किसी भी एक विंड का फॉर ओरिएंटिंग रनवेज, उसमें कुछ चीजें डिपेंड करेंगी आपकी. ठीक है, पहला है द रनवेज आर ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड. ठीक है, तो रनवेज जब भी हमें ओरिएंटेशन की बात होती है रनवे की, तो वो हमेशा जो भी आपकी विंड है, प्रिवेलिंग विंड है, उसी के डायरेक्शन में हमें रनवे का ओरिएंटेशन करना होता है. इस बात का हमें फार मोस्ट ध्यान देना है. ठीक है, द डेटा ऑन द पैरामीटर्स ऑफ द विंड, मेनली उसकी इंटेंसिटी, दैट इज स्पीड, डायरेक्शन एंड ड्यूरेशन आर एसेंशियल टू डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ द रनवेज. अब जो आपका ओरिएंटेशन है रनवेज का, वो 3-4 पैरामीटर पे डिपेंड करेगा. देखो, पहली चीज ये है कि रनवे का जब भी ओरिएंटेशन होता है तो वो प्रिवेलिंग विंड के डायरेक्शन में होना चाहिए. ठीक है, पहली चीज. दूसरी चीज, जो भी विंड है उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे उसकी स्पीड, दैट इज इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड ड्यूरेशन. these are the essential parameters to determine the orientation of the runways. Right, फिर इसी पैरामीटर्स पे
पहली चीज है हाई इंटेंसिटी विंड्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द रनवेज कॉज प्रॉब्लम ड्यूरिंग लैंडिंग एंड टेक ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर आपकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है और वो परपेंडिकुलर है to the direction of the runway, it leads to the problem during the landing and takeoff of the aircraft. So this high intensity wind, when it is perpendicular to the direction of the runway, this cause problems during landing and takeoff of the aircraft. Okay. The second thing is that the smaller aircrafts are particularly affected by these crossings. ठीक है, अगर हम इंटेंसिटी पे उसके ओरिएंटेशन पे ध्यान नहीं देंगे तो जो क्रॉस विंड्स होते हैं वो एक स्मॉल एयरक्राफ्ट को काफी ज्यादा इफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो दीज रनवेज आर ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रिवेलिंग विंड। ठीक है, एंड दीज प्रिवेलिंग विंड, द डेटा ऑन द पैरामीटर्स ऑफ द these prevailing wind, namely your intensity, that is speed, direction and duration, these are essential to determine the orientation of the runways. तो उसमें क्या क्या है, पहली चीज ये है कि high intensity winds perpendicular to the direction of the runway lead to the problem during landing and takeoff of the aircrafts, and these smaller aircrafts are particularly affected by these crosswinds. ठीक है, तो ये आपका जो स्लाइड है, this was all about the analysis of the wind for orienting the runways. अब दूसरी साइड पे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे what are the factors affecting the selection of the site for the airport, right? तो एयरपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कौन कौन से फैक्टर हमें साइट के सिलेक्शन पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहली चीज है अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट एरिया। तो पहला, जब भी हम साइट सिलेक्शन के लिए जाते हैं किसी एयरपोर्ट के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए, तो हम पहले देखते हैं कि हमारे पास अवेलेबल एरिया वो एडुकेट है या नहीं, सफिशिएंट अमाउंट में हमारे पास एरिया है कि नहीं। ठीक है, दूसरी चीज एसेसिबिलिटी, वो कितना एसेसिबल है। ठीक है, वो कितना एसेसिबल है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है टोपोग्राफी, सॉइल कंडीशन एंड ड्रेनेज। जो तीसरा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें उसकी टोपोग्राफिकल स्टडी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके सॉइल कंडीशन के बारे में जानना, पढ़ाई करना बहुत नेसेसरी इसलिए है क्योंकि हमें उसकी बियरिंग कैपेसिटी एंड ऑल के बारे में पता करना है। कहीं सॉइल सैंडी तो नहीं है, कहीं सॉइल क्लेई तो नहीं है, उसकी बियरिंग कैपेसिटी कितनी है, तब ही हम उस पर कोई एयरपोर्ट या रनवे का कंस्ट्रक्शन या उसके कंपोनेंट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। उसकी ड्रेनेज प्रॉपर्टी कैसी है, परमिएबल है, इनपरमिएबल है। ठीक है, सो आई विल नॉट गो टू डीपली इनटू द सॉइल मैकेनिक्स, लेकिन यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी आप कोई साइट का लोकेशन डिसाइड करते हो किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए और बेसिकली एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद जब हम टोपोग्राफी और सॉइल कंडीशन पे स्टडी कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कि जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल है कि नहीं, इजीली एक्सेसिबल है कि नहीं। ठीक है, तो ये एक चौथा फैक्टर है, अवेलेबिलिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल। फिर पांचवा है कॉस्ट ऑफ द डेवलपमेंट, राइट, मतलब इसके डेवलपमेंट पे, इसके कंस्ट्रक्शन पे कितना कॉस्ट आएगा, वेदर इट इज फीजिबल और नॉट, वेदर इट इज इकोनॉमिकल और नॉट, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ये सारे हमको फैक्टर्स को स्टडी करना होगा और ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं व्हाइल सेलेक्टिंग साइट फॉर द एयरपोर्ट। देन योर नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ द मेंटेनेंस, ठीक है हमारा बन तो गया, लेकिन इसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगा। आगे जब भी हम इसके मेंटेनेंस की बात करेंगे तो कितना कॉस्ट आएगा, तो ये भी हमें स्टडी करना है, ये भी फैक्टर काफी डिपेंड करता है। देन इज योर ट्रैफिक वॉल्यूम एंड टाइप ऑफ ट्रैफिक, हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम कितना है ट्रैफिक का और कैसा ट्रैफिक है वहां पे, इस फैक्टर के बारे में भी हमें पढ़ना होता है। देन योर क्रॉस विंड कंपोनेंट, अभी मैंने आपको बताया है कि जो भी स्मॉलर एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो आपके क्रॉस विंड से काफी ज्यादा अफेक्ट होते हैं, अगर परपेंडिकुलर है वो रनवे के, इसीलिए ओरिएंटेशन के बारे में हमें एनालिसिस काफी अच्छे से करनी होती है, क्योंकि जो क्रॉस विंड है वो स्मॉलर एयरक्राफ्ट को काफी ज्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, then proximity of the airways, what are the different proximity of the airways, then we have to also study about the safety factors. Safety factors are one of the most important factors which we have to take care about it. Then the revenue, again I told you कि revenue कहाँ से आएगा,
कितना पैसा इस पे खर्च होगा, what is the financial management about this the construction of this site or this airport on this site. ठीक है, तो these are actually the factors which are affecting the selection of the site for the airport, namely the availability of the adequate area. We have to define the adequate area, then accessibility of that area, then the topography, soil condition and drainage of that particular site, then the availability of the construction materials, then your cost of the development, then the cost of maintenance, traffic volume and type of the traffic, crosswind component, proximity of the airways, safety factors, and then your revenues. ठीक है, उसके बाद हम अगला पॉइंट बात करेंगे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एयरपोर्ट साइज. ओके, सो ये एयरपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन का सबसे एक आज के लेक्चर का एक लास्ट पार्ट है, लेकिन इसको भी हमको स्टडी करना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर इन्फ्लुएंसिंग द दिस एयरपोर्ट साइज, राइट. सो द various factors which are influencing the airport size are performance characteristics and size of the aircraft expected to use the airport, the first thing. Then the anticipated volume of the traffic, what will be the volume of the traffic which has to be forecasted. Then your meteorological condition, uske meteorological conditions kya hai, and elevation of site. So this the factors which are influencing the airport size, मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे एयरपोर्ट की साइज पे कौन कौन से फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस करते हैं. तो उसमें से सबसे पहला है और इम्पोर्टेंट है द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक एंड साइज ऑफ द एयरक्राफ्ट एक्सपेक्टेड टू यूज द एयरपोर्ट. मतलब वो जो भी हमारा साइज है एयरक्राफ्ट का, वो जो उसको एयरपोर्ट पे यूज करना है, उसकी परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक क्या है, राइट. उसके इंजन के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में हमको उसकी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करना, उसके फैक्टर्स को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स एयरपोर्ट की साइज को काफी इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है एंटिसिपेटेड वॉल्यूम ऑफ द ट्रैफिक. ठीक है, जो भी ट्रैफिक है उस एरिया का, जो वॉल्यूम जो होगा वो उसको एंटिसिपेट करना, उसको फोरकास्ट करना कि हाँ इतना वॉल्यूम यहाँ पे ट्रैफिक का रहेगा. ठीक है, तो ये एयरपोर्ट की साइज को इन्फ्लुएंस करता है. उसके बाद वहाँ की मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, वेदर कंडीशन, उसकी रेनफॉल एंड ऑल, विंड डायरेक्शन, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपके एयरपोर्ट साइज को इन्फ्लुएंस करते हैं. देन द एलिवेशन ऑफ द साइट, कि साइट का एलिवेशन क्या है, राइट. तो ये सारी जो फैक्टर्स हैं ये आपके इन्फ्लुएंस करते हैं एयरपोर्ट की साइज को. तो ये जो आपका लेक्चर था, this was basically introduction to the airport configuration, right. So this lecture was all about the introduction of the airport configuration, then analysis of the wind, and then site selection approach. Jisme the first thing was introduction of the airport configuration and how we defined it. This is a major determinant of the airport capacity, which is the overall layout and design of the system, the first thing. And the second thing was airport configuration is the most important factor and defined as the general arrangement of the various parts or the components of the airport system. ठीक है, the second thing. उसके बाद we can define it as the number and orientation of the runways and the location of the terminal area relative to the runways. जिसमें पहली चीज है number of the runways depends on the air traffic volume, orientation of the runways depends on the direction of the wind, size and shape of the area, and land use and airspace use restrictions in the vicinity of the airport. Then is your terminal building should be located so as to provide easy and timely access to the runways. Sorry. So this is about the introduction part of the airport configuration. उसके बाद हमने देखा कि analysis of the wind, इसमें ही आएगा analysis of the wind for orienting runways, जिसमें है कि runways are oriented in the direction of the prevailing wind. The first thing, important thing, the data on the parameters of the wind, namely intensity, that is speed, direction,
and duration are essential to determine the orientation of the runways. जिसमें पहला point है कि high intensity winds perpendicular to the direction of the runway cause problems during the landing and takeoff of the aircrafts. Smaller aircrafts are particularly affected by these crosswind. तो crosswind हमको काफी avoid करना है क्योंकि smaller aircraft को काफी affect करता है. Then we discuss about the factors affecting the selection of the site for the airport. So the factors are availability of adequate area. The second is accessibility. The third one is the topography, soil condition, and your drainage. Then availability of the construction materials, cost of the development, cost of maintenance, traffic volume and type of the traffic. Then is your crosswind component or factors, say proximity of the airways, safety factors and revenues. So these are actually the factors which affect the selection of the site for the airport. उसके बाद लास्ट जो हमारा पार्ट है आज के लेक्चर का वो है कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एयरपोर्ट साइज. So the performance characteristics and size of the aircraft expected to use the airport, the very first factor, right? And then second one was the anticipated volume of the traffic. Then third one is your meteorological condition, and then fourth one is your elevation of the site. So we have discussed today about the airport configuration. Introduction to the airport configuration, जिसमें हमने आज सारे पॉइंट्स कवर कर लिए. ठीक है, जिसमें आपके 3 पॉइंट्स थे. बेसिकली introduction of the airport configuration, we have seen the definition of the airport configuration, then we have seen the analysis of the wind and the orientation of the winds which is necessary for this runways. Okay, deciding the this orientation of the runways. Then is your site selection approach, right? So this is all about this lecture 32, that is introduction to the airport configuration. Now we'll discuss other topic related to this airport planning and design in the next lecture. So this is basically brings to the end of the lecture. So thank you so much. Thank you for listening it to very patiently. I hope if you have any query, you will write to me at ankur495@bit.ac.in. Have a nice day and good luck to every student if you are preparing for your exam. Thank you guys. Thank you so much.